السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. For welcome and introductory address, I would request our our Dean and Professor Sautar, please come up to the stage for welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. On behalf of PKLI and on behalf of the Board of Governors of PKLI, I welcome all the participants to this master class in robotic surgery. The history of robotic surgery, as far as I know, actually it goes back to 1942. There was a famous American author named Robert Heinlein. He wrote a scientific fiction story named Waldo, and he describes actually the first kind of robot in his fiction story doing a surgery on a human brain. So that is the imagination of humans can take you to a level. I think at that point in time there was no even concept of robots and things. Even the surgery was at a very primitive stage. And now in this modern world, robotic surgery is being done in neurosurgery, cardiothoracic surgery, general surgery, and almost all the fields. Including, I came to know recently that the robots are doing hair transplants as well. So I think these are very exciting times, and Pakistan is at a very early stage of robotic surgery. Minimally invasive surgery has already been performed from more than a decade now, advanced laparoscopic surgery. But I think these are good times to catch up with the rest of the world by adopting the robotic surgery. I think robot definitely has advantage over the standard laparoscopic surgery. But in my view, considering the cost, these two things will probably go side by side, maybe for another decade or so. So there will be a definite role for laparoscopic surgery, but at the same time, with high-end, complex, difficult procedures, you are going to adopt the robotic surgery. So this course is actually designed to cover most of the areas where robotic surgery can be performed. We tried hard but could not find a robotic cardiac surgeon, otherwise I wanted that we should
give a flavor of cardiac bypass done through the robots, but we could not figure out the speaker. But I think general surgical, urology, hepatobiliary, gynecology, all these areas are covered nicely in this course, and you will have the experts in the field giving you the basics and the advanced techniques about laparoscopic surgery, robotic surgery. At the same time, all the participants would have a dry lab experience with the robot, how you play with the robot, just get a bit of a basic training, and someone who is already exposed to the basics of the robot, they can have a bit of a training on the advanced module as well. So I wish you all the best, and hopefully you will enjoy the course. Thank you. Thank you, sir. For a few words from Professor Said Qureshi, who is Vice Chancellor at Dhaka University, for his welcome address. He will be addressing us virtually. Bye. Said Qureshi. Professor Said Qureshi, sir. Masterclass and workshop. I would like to congratulate Professor Faisal Samuddar and his team for organizing this excellent academic activity. The scientific program aims to introduce this new technology to the surgical fraternity, as well as bringing master trainers and speakers to share their knowledge, technique and expertise. Pakistan Society of Robotic Surgeons has also endorsed this surgical and academic extravaganza, and it's heartening to see general surgeons, urologists, gynecologists, HPP and transplant surgeons all sharing their experience at the same podium. Robotic surgery has been around for more than 2 decades and has evolved from skepticism to standard of care, with the realm expanding to almost all disciplines of surgery, with procedures like robotic kidney transplant and robotic cardiac surgery being performed. Here at the Civil Hospital Karachi, we have been able to do more than 500 transplants along with the SIUT on a number of procedures since 2011. It's high time for Pakistan to adopt this cutting-edge technology and be at par with the rest of the world. It's highly imperative that societies like PSRS, POS, and institutions like PKLI play their due part in introduction and advancement of this technology in Pakistan. We as a surgical fraternity have always been striving for excellence, and this should take this new challenge and not only master this, but also become teachers and trainers. We should aim to mold this technology to our objective conditions in the light of available evidence, and this undaunted task most certainly demands innovation. I would like to thank the organizers, and especially Professor Faisal Samuddar, for bringing this technology and knowledge closer to our surgical community and disseminating the same. I would also like to thank our speakers who have been gracious in sparing their time for us at the eve of the new year and during the holiday season. I hope this activity serves as a beacon of change and inspires others in imitating this great scientific venture. I will also stress that the significance of robotic surgery be highlighted both in the undergraduate and the postgraduate curriculum. Thanks again, and have a great time and a great weekend. Now to share his thoughts, I would request our Chairman Board of Governors, Professor Mahmood Ayasa, Professor Baji Chaudhary, Professor Baji Chaudhary, for please come up the stage for. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody, and thank you Dr. Faisal for inviting me in the company of galaxy of our stalwarts of surgery.
Professor Mahmood Ayaz and Professor Waris Faruqa, and our dear old friend Professor Naqvi, representing the College of Physicians and Surgeons of Glasgow. I'm so happy that this workshop is being organized. It was year 2001, after the 9/11, and one of my nephew was assistant professor of histopathology in Mount Sinai Hospital. And he said, "Okay, why don't you meet our chief of surgery?" I said, "Why not?" And we went there, went to the theater, and we had to wait for a few minutes, and Professor Sir came, and he said, "Sorry to keep you waiting. I was just doing a pneumonectomy in France." So this is not something very new, but they say it's never too late, and I give this credit to all our surgeons, particularly two gentlemen sitting here, Professor Mahmood Ayaz and Professor Waris Faruqa, to take it forward. And I think probably one of the aims of PKLI, in addition to doing the service to humanity and the people, should be to groom people of tomorrow. Both in kidney and liver transplantation, plus spread the knowledge, and hopefully not before too long, I think PKLI would be declared as a postgraduate institution in its own right, and I hope everybody would learn a lot from the expertise of, and all credit to these two young people, in bringing this technology, to Lahore, and of course Dr. Faisal, and let's take it forward from here and produce robotic surgeons. I was in India last week in Mumbai. There are about, I think 150 centers currently working there in robotics, and they started, probably the private sector is much stronger there. So I think it's a very good beginning, and let's take it forward. Hopefully, with the passage of time, all our institutions would have this facility, so that people can have actually hands-on training. Thank you very much for inviting me here. Thank you. Thank you, Professor. Next, I would request Mr. Mahmood Ayaz, Vice Chancellor, King Edward Medical University, for his talk on robotics and biomedicine. Thank you. Can I have that pointer? इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, फुल स्क्रीन पे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सलाम किया, शुक्रिया। That makes me very sure that you're awake now. Thank you. Thank you very much, Professor Majid Chaudhry Sahab, the chairman of PKLI, for being here today, and our own teacher, Majid Sahab, and I must thank Faisal Dar for asking us to be here as a part of their team to impart this kind of knowledge to the local trainees and the surgeons and things like that. हम बहुत ज़्यादा नॉलेज तो आपको इम्पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, और ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ कि हमें कुछ अपने, जब हम ट्रेन हो रहे थे, हमें कुछ टीचर्स ऐसे मिल गए, ज़फ़रुल्लाह चौधरी साहब और प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब, जो कि पायनियर्स थे अपने अपने फील्ड्स के अंदर, स्पेशली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. They were there
to introduce laparoscopic surgery in Lahore in Pakistan. जो उस वक्त ऐसे ही लगता था जितना ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना। ये तमाम जो क्वेश्चंस रोबोटिक सर्जरी पे उठाए जा रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चंस उस वक्त इन लोगों ने फेस किए कि कैसे आएगा, कितना महंगा इक्विपमेंट है, खर्चा कितना होगा, कौन लोग कराएंगे, ये तो कोई कराएगा ही नहीं, ये तो कोई आएगा ही नहीं। तो इन सब ने सब कुछ फेस किया। आंसर इन योर लाइट वी सीक आवर लाइट, आपकी जो इस जरूरत और बहादुरी ने जिसने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से हमें भी ख्याल आया कि ये तो चिराग जलता ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये थम जाए। So we had a share of being trained by them in the field of laparoscopic surgery. We went on to advanced laparoscopic surgery, and then we thought that it's high time that this kind of surgery should be introduced in Lahore, because it was already there in Karachi, and they were doing it, with the great enthusiasm and great vigor. But somehow or the other, the northern part of Pakistan was deprived of this kind of facility. So we thought that it's high time, and I'm very absolutely glad that now this is being spread all over in Pakistan. और इस्लामाबाद में पहले लाहौर में कोर्सेज हुए, इस्लामाबाद में कोर्सेज हुए, and this center of excellence actually chose that this is time to actually conduct the first master class in robotic surgery. And Faisal, and to your team, I'm absolutely grateful that you took this initiative and asked us to be a part. और ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि time has changed. जो रिसेंट हमने अपनी कैडावरिक वर्कशॉप्स कराई, हमने जो ट्रेनिंग कराई, उसमें PKLI ने बहुत सपोर्ट किया सोसाइटी ऑफ सर्जन्स को। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसमें फुली कोलैबोरेट किया, शौकत खानम ने कोलैबोरेट किया। सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और चूँकि अब प्रोफेसर मजीद चौधरी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं सर, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जिस तरह की आपकी तबीयत है टू क्रिएट एडवांसमेंट्स एंड टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग, तो मेरे ख्याल में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और PKLI, शौकत खानम, हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं, हम सब ने आपसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपकी वजह से कि हम लोग यहाँ पर हैं। और अब आप इसको लीड करें कि ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस जो कि लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं, ये कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें, और वी शुड मेक आवर मार्क एंड ताकि हमारे आने वाले स्टूडेंट जो आज सामने सारे बैठे हुए हैं, एक टाइम पे इसी पोडियम पर आके ये लोग भी बात कर रहे होंगे, तो ये भी जब हमारा नाम इनके चेहरों इनके ज़बान पे है, तो ये भी हमें ना एक मुस्कुराहट के साथ याद कर सकें कि ये लोग थे, जैसे हम आपको याद करते हैं और हमेशा आपका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इस नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। सो आई विल एक्चुअली गो ऑन जस्ट टू गिव यू फील दैट व्हाई रोबोटिक सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस कैसे इवॉल्व हुई और हमने इसका सफ़र कैसे तय किया। सो इट शुड बी इन योर नॉलेज, इट शुड not be a very lengthy talk, but I just want to introduce that what is robotic surgery and what is the evidence behind this, क्योंकि scientific होना चाहिए ना। देखिए about जब हम ट्रेन हुए शुरू में, तो हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया कि big surgeons will make big incisions, mediocre will make medium kind of incisions, and putting in smaller incisions was a shame. Okay, this is always going to bring a shame. तो हमें खुसूसी तौर पे सिखाया जाता था कि सर्जरीज कर रहे हैं तो make big incisions. But the patients, they had their other, thoughts about it. They wanted a relatively painless surgery through shorter incisions, smaller incisions. They wanted a speedy recovery, and they wanted a surgery which should be flawless and should be absolutely safe. That is what was their demand. So minimally invasive surgery stepped into just to facilitate this patient-centered approach. And naturally, when you came across, and I think मैंने लिखा हुआ है कि I think that the patients were absolutely right. उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी कि हमारी जो है ना इंसिडेंस छोटे होने चाहिए, हमें पेन बहुत कम या ना ही होनी चाहिए, हमारी रिकवरी स्पीडी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम दिस सर्जरी शुड बी एब्सोल्युटली सेफ. दे वांटेड टू हैव अ सेफ सर्जरी, ये उनकी पहली बड़ी डिमांड थी. कैन आई मूव फॉरवर्ड? आप क्लिक कर दें मुझसे. जी मैंने किया लेकिन आगे मूव नहीं हुआ. कोई बात नहीं, आप कर दीजिए उसको जी. Okay, thank you. So actually, what robotic surgery did was that it changed the perspective of the surgeons towards a patient-centered approach, ताकि patients की demand को fulfill किया जा सके. So that was what robotic surgery did. लेकिन we were actually very comfortable. And the robotic surgery, they were very comfortable because robotic surgery stepped into an era where minimal invasive surgery was already being practiced all over the world. और यहाँ से इसको लेके आगे चले.
और जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के जो एडवांटेजेस थे, वी ऑल नो दैट द एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए कि रिड्यूस्ड वुंड एक्सेस ट्रॉमा था, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे थी, इम्प्रूव्ड विजुअलाइजेशन थी, लेस पोस्ट ऑपरेटिव वुंड कॉम्प्लिकेशन थी, लेस अमाउंट ऑफ डिसफिगरमेंट थी, और आहिस्ता आहिस्ता लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने ये प्रूव कर दिया कि इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू। तो ये सारे क्वेश्चन जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की गई, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी शुरू की गई, तो इसलिए उस वक्त ये तमाम सवाल हमारे सामने आए, और one by one all these questions were addressed and addressed very effectively in a way that the minimal invasive surgery has become almost the gold standard in various kinds of surgeries as compared to an open surgery. So that is a definite documented evidence. रोबोटिक सर्जरी ने इसके ऊपर कैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे एडवांसमेंट की, बिकॉज दिस इज अ डेफिनेटिव एडवांसमेंट ऑन इन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एज फार एज द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज कंसर्न। तो जो पहला आप देख रहे हैं कि इट क्रिएटेड अ बेटर विजुअलाइजेशन, इट क्रिएटेड अ 3D डेप्थ परसेप्शन, बहुत बेहतर तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स मैग्नीफाइड फॉर्म में नजर आने शुरू हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी को, बिकॉज इन द लास्ट 500 years ऑफ मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिस वी ऑलवेज वुड हैव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिजिड इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो ओपन सर्जरी थी, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी। दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी जो मॉड्यूलेशन और इसकी रोटेशन और इसकी, वी हैड टू टेक द हेल्प ऑफ आवर शोल्डर्स, वी हैड टू टेक द हेल्प ऑफ आवर एल्बोज। बट इन द लास्ट 500 years of recorded innovations in surgical instruments in the human history, this was the first time that there was an instrument which mimicked the human wrist. A 360-degree rotations inside the human body, this was not there. And not only a 360-degree rotations inside the human body, but it's a 720 degrees कि आप रिवर्स भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप A.G. Wells की आउटलाइन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें उसने बड़ा क्लियरली डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि the only thing which actually made mankind, the human beings, different from other animal species, और वो हावी कैसे हुए, वो सिर्फ वैसा कि that the humans had a human wrist, जो कि और एनिमल स्पीशीज के पास नहीं थी। इसी से इसने वो जो है शिकार करने वाले टूल्स इजाद किए, इसी से इसने वो खेती बाड़ी करने वाले टूल्स, तो इस तरह ह्यूमन रिस्ट डेवलप हुई। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिस्ट इन द ह्यूमन बीइंग्स। ये जानवरों के पास नहीं थी, अदर स्पीशीज के पास थी, थोड़ी सी चिंपैंजीज के पास है, बट दे कैन नॉट आर्टिकुलेट देयर रिस्ट एट अ 360 degrees. So now there is an instrument which can actually rotate at 360 degrees just like a human wrist inside it. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज सबसे बड़ा हुआ कि देयर वाज improved kinematics, which means that with smaller amount of movements of your hands outside, you can create a bigger impact inside the human body. वो आपको बड़ी बड़ी हाथ से मूवमेंट्स नहीं करनी पड़ी। किसी ज़माने में था कि जिस सर्जन की उंगलियां लंबी होंगी, जिसके जो है ना वो हाथ पतले होंगे, जिसके स्मूथ होंगे, लड़कियों की तरह के हाथ होंगे, वो ज़्यादा जो है ना वो बेहतर सर्जन होगा। Now this has totally changed. वो कुछ हद तक दुरुस्त भी था। This has totally changed. Your hands don't matter. It is your skill which matters at the level of your human wrist. वो चीज़ मैटर करती है। And at the same time, there was improved ergonomics, which means कि आपको जब शोल्डर्स पे मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, जब आपको एल्बोज पे मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, ये आपकी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। Whereas when you're doing movements at your wrist, skillful movements, तो आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। तो उसकी वजह से longer operations became more facilitative. आपको बैठ के काम करने की एडवांटेज होना शुरू हो गया। आपको जो है ना आपको जो स्ट्रेस था वो बहुत हद तक खत्म हो गया। So it is very important. So that is what the robotics have actually done to the laparoscopic surgery and to the open surgery. But let's say what is the evidence for this? देखिए, ये तो डेफिनेट है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने जो मेटाबॉलिक इंसल्ट थी और जो लोड था ऑन द ह्यूमन बॉडी उसको सिग्निफिकेंटली कम किया एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी। But when we actually compare the current robotic surgical evidence as compared with the open surgery, so you can see that there is a definite advantage as compared as reducing the operative and the post-operative complications, reducing the blood loss and improved recovery time and less pain. ये तो open surgery के ऊपर तो उसका definite advantage है, because surgeons have actually converted directly from open surgery into robotic surgery without going into laparoscopic surgery. और सुना है कि जो ओपन सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी पे चले जाते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव सर्जन, बिकॉज कुछ आपकी लैप्रोस्कोपिक स्किल्स जो है ना क्लैश करती हैं विद द रोबोटिक। बट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का नो हाउ होना बहुत जरूरी है। बट व्हेन यू कंपेयर इट विद द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी,
the results are almost equivocal because अभी तक साइंस जो है ना बहुत डेफिनेटिव एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का ओवर जो है ना वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टैब्लिश नहीं कर सकी बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ स्टे कन्वर्जन रेट्स जो है ना इसका डेफिनेट एडवांटेज है बट स्पेशली इन द एल्डरली एंड द ओबीस ये इसकी तो डेफिनेट एविडेंस अब आ चुकी हुई है बट जो बड़े कंसर्न्स है रिगार्डिंग रोबोटिक सर्जरी वो ये है कि जो लेंथ ऑफ रोबोटिक सर्जरी जो है ना उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है बिकॉज इक्विपमेंट सेटिंग टाइम है और रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया का टाइम जो है ना प्रोलॉन्ग्ड है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बट एज योर टीम्स दे जेल अप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो है ना ये जो स्लैकनेस है ना ये खत्म होती चली जाएगी और आपका टाइम जो है ना of preparation of the patient, setting up the robotic equipment and then recovery from anesthesia क्योंकि यहाँ पे deep anesthesia देना पड़ता है and you have to have specially trained anesthetists because जो अगर इस दौरान पेशेंट को मतलब if the patient becomes awake और उसके muscles tight होना शुरू हो जाते हैं और strain आना शुरू हो जाता है this cannot happen in robotic surgery because कुछ हद तक instruments ह्यूमन बॉडी के ऊपर फिक्स्ड होते हैं तो आप बहुत जल्दी इनको विड्रॉ नहीं कर सकते अगर पेशेंट तो देयर इज अ रिस्क ऑफ सीवियर इंजरी तो इसलिए आपको जो है ये थोड़ा सा इस चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है बट लेट्स सी कि देयर इज अ डेफिनेट एडवांटेज इन पीपल हु आर ओबीस एंड पीपल हु आर एल्डरली एज कंपेयर टू कन्वर्जन रेट्स एंड एज कंपेयर टू द इंट्राऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी और ये तो डेफिनेट एडवांटेज है कि रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो अर्ली बाउल एक्टिविटी इज much more rapid as compared to laparoscopic and open surgery. तो ये तो definitely proven advantages हैं, but इसके बारे में ना ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो मेटा एनालिसिस है वो उसके बारे में क्या कहते हैं. अब रोबोटिक सर्जरी का जो हमारे पास मेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था दैट वाज ओनली फॉर द लास्ट 30 years. तो अगर आप इसमें देखें कि इसमें जो जब ये कंपेयर किया गया आपस में तो देयर वाज इन व्हेन वी कंपेयर्ड द रोबोटिक वर्सेस ओपन सर्जरी this included 11 randomized controlled trials and 39 prospective studies और which इन्होंने definitely demonstrate किया कि there is a lower blood loss, there is a lower aspirin rate and there is lower length of hospital stay and there is reduction of the 30 days overall complication rate by 63.7%. So the robotic surgery versus open surgery definitely the evidence, the randomized controlled trials and the meta-analysis show that there is a definite advantage. So science ने इसको तो prove कर दिया. But when we actually compare it with the robotic surgeries with the minimal invasive surgery like laparoscopic surgery, उसके साथ compare करते हैं तो data अभी बहुत robust नहीं है. But definitely इसने ये बताया कि there is a mildly reduced blood loss. The transplant rate has been reduced in robotic surgery and similarly length of hospital stay is definitely lesser and the pain is lesser in robotic surgery. So the robotic surgery has got a bit of advantage in the laparoscopic surgery but अभी हम उसको definitely in the form of randomized controlled trials के तौर पे 100% इसको prove नहीं कर सके और इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी के जो ऑपरेटिव टाइम्स है वो 7.3% लॉन्गर एज कम्पेयर टू मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी तो इसलिए इस चीज़ को जो है ना हमें अपने ज़हन में रखना है बट दिस लॉन्गर ऑपरेटिव टाइम्स कैन बी ओवरकम. कैन यू मूव इट फॉरवर्ड प्लीज फॉर मी. जी ठीक है तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ कि हमारे पास जो अभी एविडेंस है वो बहुत रॉबस्ट नहीं है लेकिन उसमें हम इस तरह से ये भी देखा कि जो हमारे पास सारी की सारी हम डेटाबेस को जब असेस करते हैं तो थोड़ी सी स्टडीज हमें इसमें बायस नजर आती हैं एंड दिस बायस हैज टू बी ओवरकम बाय मोर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. तो जैसे से मोर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्स आ जाएंगे स्पेक्ट्रम बेहतर होता जाएगा तो शायद जो अभी तक जो एविडेंस सजेस्ट करी है दैट रोबोटिक सर्जरी विल डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी. कैन वी मूव फॉरवर्ड प्लीज. कैन वी मूव फॉरवर्ड. So I'll just take you through our course कि हमने कैसे develop किया. When we actually started this surgery in National Hospital, so why did we have this idea? मैं और Professor Varis we were at the SAGES conference और हमारा वहाँ पे एक paper था. So there were 97 papers which were being read in the that conference. उस 97 में से 96 papers were on robotic surgery. And there was only one paper on laparoscopic aneurysectomies और वो मेरा प्रोफेसर वारिस का था. तो वहीं पे हमें अंदाज़ा हो गया कि वी आर फार बिहाइंड द वेस्ट. तो ये पिछले अक्टूबर की बात है. तो वहीं पे बैठे बैठे मैंने और प्रोफेसर वारिस ने ये तय किया कि नाउ व्हेन वी गो बैक टू पाकिस्तान वी विल बी देयर विद अ रोबोटिक इक्विपमेंट. तो मैंने वारिस साहब को वहीं छोड़ दिया. मैं कहा जी आई हैव टू गो बैक बट आप यहाँ पे ठहरे
और वाल साहब मेहमान वाल साहब, तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम डिवेंशिया नहीं लेके जा सकते पाकिस्तान में. There was the only access we had with the CMR robotics in UK. वाल साहब ने वहाँ पे उनसे बात की, and finally when we came back to Lahore, तो वहाँ पे सबसे बड़ा था कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे. How to bring this very costly equipment of 60 crores to a private hospital, जो कि जिनका ख्याल था कि 60 करोड़ में तो आप एक नया अस्पताल बना सकते हैं, आप किस काम के पीछे पड़ गए. We had to convince our board, and then we joined together. और जब हमने आपस में join किया, so you can see that we had a team of urologists, which was headed by Professor Rafiq Zaki, who is sitting here. A team of gynecologists headed by Professor Maimuna Hafiz and Professor Rehana and Professor Samia Malik. और मेरे साथ मेरे हमेशा के partners Professor Waris और Professor Basim थे. So we all decided to actually get this thing in. To convince the hospital, we had to put in money. तो इस वक्त प्रोफेसर मैमूना बैठी हुई है, प्रोफेसर वारिस बैठे हैं, रफीक जकी बैठे हैं, तो हमारे सब के जो अपने घर हैं प्लेज्ड हैं टू द बैंक्स, क्योंकि वी हैड टू टेक आउट दिस मनी. सो दिस प्रोग्राम फेल्स, वी विल बी आस्किंग PKLI फॉर सम प्लेस इन द हॉस्टल कि आप हमें अकोमोडेट कर लें. सो वी हैव टू एक्चुअली मेक दिस प्रोग्राम सक्सीड. और इस छोटे से अस्पताल से सक्सेस हमें नहीं मिलेगी. वी हैव टू स्प्रेड इट ऑल ओवर इन लाहौर. Multiple big teaching institutions like PKLI, like Shaukat Khanam, like King Edward Medical University, like SIMS, they have to actually go ahead and get it done. हम क्या ट्रेन कर सकते हैं, 2, 3, 4 लोगों को ट्रेन करेंगे, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा. We have to train in bulk. There should be a plenty of robotic surgeons. There is a बेशुमार of laparoscopic surgeons. They all came out from all these institutions to have this learning. So we had our pledge over there. हमने आपको बता दी कि pledge भी क्या था, उसमें आपको कुछ sacrifice भी करना है. So the hospital thought that we are pretty actually convinced about this. So they also allowed and put in this money. अब पहला ये था कि हम अपनी टीम को ट्रेन कैसे करें, but it was because I had this taste of robotics in Boston in 2015, back in 2015. But we really need to have people who are trained together. And not only the surgeons, but the gynecologists and the urologists, क्योंकि इकट्ठा मिलके काम करना चाहते थे. और उसके अलावा the paramedics and the nurses, so we took all of them along. हम सबको साथ अपने ले गए और we put in money, और हमने कहा कि नहीं, हम इन सबको साथ लेके जाएंगे, हम सब इकट्ठे ट्रेन होंगे. So we got a training and welcome Professor Hannah, हम आपका भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे. So practically we picked up the 3 most beautiful gynecologists in Lahore, जो हमारी टीम का हिस्सा बने. और तो they are all here. समया आ जाएंगी थोड़ी देर में? जी, she'll be on her way. तो हमें बड़ी इनकी सपोर्ट है. ये जब हम अपना काम करते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, जब ये काम करते हैं, जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो वे देयर. सो वी ऑल हैड अ ट्रेनिंग 1 by 1. हम गए, हमने बेंच ट्रेनिंग की जो आप बाहर देख रहे हैं, हमने बॉक्स ट्रेनिंग की, वो भी आपके पास है, हमने जो है ना कैडावर्स पे ट्रेनिंग की. सो वी डिड ऑल एवरीथिंग एंड देन वी एक्चुअली गॉट अ बिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग कि हमने वहाँ पे काम कर लिया. बट अब सबसे बड़ा मसला हमारे लिए था टू कम बैक टू लाहौर. अब रिसेंटली हमने अपने तमाम थिएटर्स को नेशनल हॉस्पिटल में ना हमने रिफर्बिश किया था और हमने मॉड्यूलर थिएटर्स बनाए थे. टू कन्विंस द हॉस्पिटल कि ये 5 करोड़ का थिएटर आप डिसमेंटल करें और नया हमें ऑपरेशन थिएटर बना के, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी के थिएटर्स की थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट्स है. तो ये बड़ा मुश्किल मरहला था. तो बहरहाल वो हमने उनका थिएटर, आप देखते हैं हमने बना बनाया थिएटर सारा डिसमेंटल किया और हमने नया थिएटर. दिस इज आवर रोबोटिक सर्जरी थिएटर व्हिच यू सी ऑन टू द लेफ्ट. और ये अब यहाँ पे हम अपने सारे काम करते हैं. और हमने अपने दिन मुख्तस किए. 2 दिन जनरल सर्जरी करते हैं, 2 दिन यूरोलॉजी करते हैं, 2 दिन गायनेकोलॉजी करते हैं. लेकिन जब किसी का कोई दिन खाली हो तो बिकॉज हम चाहते हैं कि हम 7-8 केसेस, एटलीस्ट 20 से 25 केसेस हर महीने हम ज़रूर कर रहे हो. एक वीक में 7-8 केसेस हम कर रहे हो. So if you see that this was फिर हमने इसका टेस्ट 1 किए, बिकॉज टेस्ट रनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा पहला टेस्ट 1 था. हमने अपनी सर्जरी हमने 29 मई को की. उससे 2 दिन पहले हम टेस्ट 1 करते रहे. हमने जाके उनको मॉडल्स के ऊपर रख के. सो वी कैन सी द होल एनेस्थीसिया टीम, द होल गायनेकोलॉजी टीम, द होल यूरोलॉजी टीम एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन दे वर देयर. प्रोफेसर शाहिदा खाजा, वो उन्होंने खड़े होकर सारी चीज़ों को सुपरवाइज किया, बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड, बिकॉज दे हैड पुट इन अ लॉट ऑफ मनी एंड created the space for us. So they also wanted that this program should succeed. So remember, it will always be a joint effort from the administration side, from the consultant side, and the teams joining together. ये तभी मुमकिन हो सकता है. And then you can see on the first side, this is our first robotic surgery which we did. This was a robotic appendectomy, and once again you can see that the whole team joined it. Normally हम इतने ज़्यादा लोग इस theatres में नहीं होते,
बट दे ऑल वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, और सारों ने मिल के तो जो है ना इसको किया। और फिर उसके बाद कैन यू क्लिक इट ऑन? तो यू कैन सी दैट द होल टीम वाज देयर, हमारे रेजिडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे, दे वर वेरी एंथुसियास्टिक, दे वर टेकिंग पिक्चर्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला केस 29 ऑफ जून को ना हमारा सक्सेसफुल हो गया, एंड दैट गेव अस अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। और फिर उसके बाद फिर हमने जो है आप देख रहे हैं कि हमारी हमेशा जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है। जब प्रोफेसर वारिस साहब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के करता हूँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू कमिट अ मिस्टेक है, ठीक है। और जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो वारिस साहब सारी टीम बैठ के देख रही होती है, बिकॉज ऑल आइज आर ऑन द स्क्रीन एंड वी डू नॉट वांट टू कमिट अ मिस्टेक, बिकॉज जब अगर इसमें हम गलती कर बैठेंगे स्टेज में तो दिस विल गो इनटू डिसरिप्यूट, सो वी डोंट वांट टू कमिट अ मिस्टेक इन दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो हम 129 केसेस कर चुके हैं, दे हैव गॉन थ्रू फ्लॉलेस, जस्ट बिकॉज दी होल अगर मैं किडनी का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो रफीक जकी साहब मशवरा देने के लिए मौजूद है। मैं कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहा हूँ या ये लोग कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करें तो वी आर देयर इन द थिएटर, सो इट हैज़ टू बी अ जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट इन द बिगिनिंग, ताकि हम किसी पे कोई गलती ना खाएं। एंड यू कैन सी कि ये आपको साथ डैशबोर्ड पे आपका डेटा आता रहता है, एंड दिस डेटा इज सेंट्रली मॉनिटर्ड। ये यूके में भी डेटा एस्टैब्लिश हो रहा होता है। ये डेटा है लास्ट नवंबर का, ये जो लास्ट नवंबर गुजरी है जिसमें मैंने अपने 50 केस किए, उस सारे केसेस का डेटाबेस आपके सामने साथ साथ यू कैन एक्चुअली कीप ऑन सीइंग दैट डेटाबेस। और ये कंप्लीट डेटाबेस है, और ये इसमें सबसे बड़ी वह है कि हम अपनी रोबोटिक सर्जरी की रजिस्ट्री मेंटेन कर पा रहे हैं। Wherever in Pakistan robotic surgery is being done, there is a central registry which is maintaining that database. हमारे पास अभी तक all over Pakistan किसी चीज़ की central database की registry नहीं है, but this is the first time that we have a central database registry of robotic surgery all over from Pakistan, and this database is being monitored from UK. ताकि उस डेटा के अंदर जो है ना we can actually put in the data but we cannot manipulate the data. So whatever it is here is an absolute truth. और ये हमें बाद में डेटा हमें बताता रहता है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ कितनी है, दैट इज़ ऑल डिपिक्टेड। हमारे यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो हमारा कंसोल टाइम कितना था, रोबोट पे कितनी देर तक हम बैठ रहे हैं, हमारा एक्चुअल ऑपरेटिव टाइम कितना था, कितनी देर तक हम बातें कर, आप सर्जन बातें भी करते हैं एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करते करते, तो कितनी देर तक हम फोकस से सिर्फ कंसोल पे बैठ कर हम काम कर रहे थे, एक्चुअल सर्जिकल टाइम हमारा कितना था। सो दिस कीप्स ऑन लेटिंग अस इवैल्यूएट आवरसेल्व्स, हमारी अपनी रिफ्लेक्शन होती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किन जगहों पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले 3 महीने का हम हर सर्जन का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। ये पहले 3 महीने का डेटा जो ये नज़र आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि मेरा सर्जरी टाइम कितना था, कंसोल टाइम कितना था, एक्चुअल ऑपरेटिव टाइम कितना था। सो दिस कीप्स ऑन, और मेरी हैंड मूवमेंट्स जो मेरी वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड वो आपको दिखाते रहते हैं। तो अगर आप इसको देखें स्क्रीन पे अगर आप देखें तो शायद इस पे नज़र नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे मेरा ऑपरेटिव टाइम और कंसोल टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे वो ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरी हैंड मूवमेंट्स भी ज़्यादा है। तो दिस वाज अ 6 months डेटा। ये आपको बताता है कि आपकी हैंड मूवमेंट्स किधर कहाँ क्या एक्टिव है, कहाँ आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। और दिस इज अ 6 months डेटा आफ्टर नवंबर। तो यू कैन सी दैट ग्रेजुअली ये जो आप पीक्स नजर आ रही है, मेरा कंसोल टाइम जहाँ पे आपको ज़्यादा नजर आ रहा है, दिस फॉर एवरी सर्जन, दिस इज इनबिल्ट इन द कंप्यूटर। तो ये आपको साथ साथ नजर आ रहा है कि आप देखें कि जहाँ पे कंसोल टाइम है वहाँ पे मेरा हैंड मूवमेंट ज़्यादा है, और आप देखें कि एंड पे आके जहाँ पे मेरी हैंड मूवमेंट थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, ये बढ़ गई हैं। ये इस वजह से हुआ कि नाउ देन वी स्टार्टेड एम्बार्किंग अपॉन डिफिकल्ट सर्जरीज। हमने लैप्रोस्कोपिक स्टेक्टमी से, हर्निया से हट के ना हमने डिजिटल पेंकेटेक्टमीज, ठीक है, डिजिटल पेंकेटेक्टमीज शुरू कर दी, हमने रोबोटिक एडरेक्टमीज पर अटेंड करनी शुरू कर दी। सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा कंसोल टाइम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया और मेरे हैंड मूवमेंट्स थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई। तो ये आपको साथ साथ बताता जाता है कंप्यूटर के, आपको बिकॉज देयर इज एन इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको सिखाता जाता है कि किस मौके पे आपने क्या करना है। एंड दिस गिव्स यू यू नो द रेंज ऑफ मूवमेंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे राइट हैंड की जो मूवमेंट्स है दैट इज 22.7 सेंटीमीटर्स, जिसका मतलब है कि मैं अभी भी थोड़ा सा आउट ऑफ, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता कि आपको 20 सेंटीमीटर्स की रेंज से आप बाहर हो। और इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे 22 है। सो ग्रेजुअली हम इसको इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। बट व्हेन वी आर ऑन डिफिकल्ट सर्जरी, जो प्रोलॉन्ग सर्जरीज होती हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। कैन यू टैप इनटू द नेक्स्ट वन प्लीज? आप नेक्स्ट साइड पे कर देंगे प्लीज, इसी को आगे कर दें। थैंक यू। तो यहाँ पे देखें कि जहाँ पे अगर इसको देखें कि जहाँ पे मेरा कंसोल टाइम ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि मेरी हैंड की जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है 34 सेंटीमीटर्स ऑन द राइट साइड है,
and 37 centimeters on the left side है. This was when I was attempting robotic nephrectomy रफीक जकी साहब की इजाज़त के साथ. तो मैं चूँकि बहुत इसमें मतलब accomplish नहीं था, तो आप देखें कि मेरी जो range of movements है वो ज़्यादा है, which means that I need to have more training. So this keeps on training you again and again and again कि आपकी जो है ना आपकी जो proficiency को improve करता रहे just because of this artificial intelligence. So this is just a brief data. In general surgery we have done 80 cases, gynae में 38 and urology में हम जो है ना because the Fiq Zaki Saab is very particular about choosing his cases and then accomplishing it. और ये बहुत effectively, but you can see that we have done 129 cases in 6 months, which is roughly about 22 to 23 cases a month. So in a private sector जहाँ पे patients को ये pay करना है और उसको convince करना है कि you spend enough, because जब हम ये कर रहे होते हैं the company is very gracious. वो उसने तो पहले बहुत ज़्यादा रखा था पैसा, लेकिन ग्रेजुअली हमने उनको कन्विंस किया कि इतने पैसे पे नहीं करे, बट स्टिल 150,000 to 160,000 अभी भी पेशेंट को पे करना पड़ता है फॉर. सो प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट्स को कन्विंस करना कि आप ये आके कराएं तो सिर्फ महंगा, तो जब देखते हैं कि लैप्रोस्कोपी में हमारा 1.5 लाख कम लगना है तो दे विल ऑब्वियसली चूज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बट वी हैव बीन एबल टू कन्विंस पीपल. सो यू कैन सी दैट ये हमारे एवरेज टाइम्स अभी आपको ज़्यादा नजर आएंगे. आप देखें कि हमारा एवरेज टाइम सर्जरी में 1 hour and 45 minutes है, गायनी में हमारा 1 hour and 48 minutes है, यूरोलॉजी में हमारा 2 hours and 60 minutes है. लेकिन इफ़ यू एक्चुअली सी दिस ग्राफ जो हमारी प्रोफिशिएंसी का ग्राफ है, तो आप देखें कि ये तमाम जो हमने सिर्फ 3 चीज़ों को हमने मेजर किया है. हमने जो हम डिफिकल्ट सर्जरीज करते हैं उनको हम मेजर नहीं कर रहे. हमने सिर्फ वेंट्रल हर्नियाज को, इंग्वाइनल हर्नियाज को, कोलिसिस्टेक्टमी को दिए. तो अगर आप इनका अलग ग्राफ निकाल के देखें तो यू विल फाइंड आउट कि हमारा जो ऑपरेटिव टाइम है वो भी कम होता चला जा रहा है, हमारी स्किल भी इंप्रूव करती चली जा रही है, और हमारा जो इनफैक्ट जो एक्चुअल कंसोल टाइम है वो भी हमारा कम होता जा रहा है. सो ग्रेजुअली यू कैन सी दैट दिस ग्राफ डिपिक्ट्स, बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड ग्राफ. इट कीप्स, ये हम नहीं बना सकते ग्राफ, यूजर टेल्स यू दैट व्हाट यू आर डूइंग इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो यू कैन सी दैट जहाँ पे हम जुलाई में खड़े हुए थे वहाँ से हम बेहतर होते चले जा रहे हैं. एंड एक्चुअली we are trying our best to actually come down to this lower level. ये 20 to 40 minutes की रेंज में हमें अपने आप को यहाँ पे रखना चाहते हैं, but probably that will take some time और हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा. But I must tell you that the future is here, and we should all acknowledge, sitting in this beautiful institution, we should all acknowledge in the presence of sir that the future is here. और हम करना क्या चाह रहे हैं उसके अंदर? हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना रोबोटिक सर्जरी का रजिस्टर हो जिसमें अपना नेशनल डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो सारे के सारे को. वो कुछ सम और दी अदर आर्टिफिशियल इनबिल्ट इंटेलिजेंस की वजह से जहाँ इस वक्त CMR का रोबोटिक्स लग रहे हैं वो हमारा नेशनल डेटाबेस वहाँ पे आता चला जा रहा है. देखिए अभी तक हमें कोई सर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स रोबोटिक सर्जरी की नहीं है. हमने अपनी रोबोटिक सर्जरी के प्लेटफॉर्म पे हमने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का वो सर चूँकि बिकॉज you are the only one who can actually take our legislative reforms to the Chief Minister and get them approved. तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी प्रेजेंस में, सबकी प्रेजेंस में, कि अगर आप हमारे लिए करा सके तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइडलाइंस मौजूद हो. बिकॉज ऐसा ना हो कि जब लैप्रोस्कोपी में आया था तो जिसकी कुव्वत खरीद थी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, उसने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड यू नो दैट द काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस यू ऑल हैड टू फेस, CVD, तो वो आपको तो पता ही है उसका. सो वी डोंट वांट दिस टू हैपन. तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है. आप हमें हमारी मदद कर देंगे. हम आपके सामने सारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ला के रख देंगे, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड इफ़ यू थिंक दैट दे आर ऑलराइट यू माइट प्रेजेंट इट टू द चीफ मिनिस्टर, और आपके एक कहने से हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. और फिर उसके बाद वी हैव ऑलरेडी टॉक टू द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स टू डेवलप अ फेलोशिप इन रोबोटिक सर्जरी. लेकिन वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब मल्टीपल सेंटर्स में ये सारी रोबोटिक सर्जरी हो रही होगी. वी आर वेरी ओपन एट नेशनल हॉस्पिटल. एनीबडी हू वांट्स टू कम एंड जॉइन अस एंड टू लर्न एंड बी अ पार्ट ऑफ अस, यू आर ऑल वेरी वेलकम. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन दैट इज़ अ वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशन. ठीक है ना, वो उसका मुकाबला PKLI के साथ या उसका मुकाबला आप जो है ना किंग एडवर्ड के साथ या शौकत खानम के साथ नहीं कर सकते. दिलों ने बहुत बड़ा किया हमारी वजह से, बहुत जो है ना उनका जो दूसरा अस्पताल खोलने का प्रोग्राम था उन्होंने ठप किया और उसको हमें रोबोट ले लिया. पता नहीं अब उसमें वो उनकी अब इसके बारे में क्या रहा है. बट आई थिंक दैट दे आर क्वाइट हैप्पी इन दिस. बट दिस इज व्हाट आई नीड टू, एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली थैंक ऑल ऑफ दिस पीपल, एवरीबडी were a part of this program. जो उसमें से बहुत से लोग तो यहाँ पर बैठे हैं, बट प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा, उनकी टीम, रिजवान और एडमिनिस्ट्रेटर, जकी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैमूना यहाँ पे बैठी हुई है, रेहाना यहाँ पे बैठी हुई हैं.
And in the end, I must thank my team because they are everything for me. Without them, I'm nothing. ये सब मिलके मेरे लिए काम करते हैं, इनको मुझे तो पता भी नहीं होता काम पीछे चल रहा होता है. So I'm very very obliged to all of my team and thank you Professor Varis for being the. ये actually सारा जो focus नजरिया लाने का सिलसिला करने का सिलसिला ये प्रोफेसर वारिस ने किया है. तो मैं तो चूंकि इनके साथ फिरता रहता हूँ तो साथ मेरा भी नाम लग जाता है. बट थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर वारिस फॉर एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. हमने आपसे एक दरख्वास्त की है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं इंतजार करता कि आप आए तो हम शुरू करें, क्योंकि मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता था कि आप हमारी मदद करें और आई एम श्योर दैट यू एज योर नेचर इज यू विल हेल्प अस आउट. थैंक यू वेरी मच फैसल फॉर गिविंग दिस. Thank you, Professor Mahmood Ayasa, for an excellent talk. Now, I would request Professor Varis Faruqa to please come to the stage to share his thoughts on general surgery perspective and robotic surgery. So it's always honor and privilege to be here amongst our very dear colleagues, Professor Faisal Saudar, Ihsan, Yasir Khan. And I'm thankful to Professor Abdul Majid Chaudhary, who is our teacher, mentor. Professor Ayaz is here, and I'm extremely thankful to Professor Nadeem Nusrat, who has invited us all here to share our data. So can we have our first slide? So there may be some slide overlap which I would try to skip. Next. इधर सब 3 स्लाइड चाहिए. So I will be just going through a brief journey how we have started and the local data which we have produced so far. Obviously there must not be so much base behind this, but we will be sharing our local data. And general surgery is one specialty which has taken this robotic surgery very late as compared to colorectal and cardiothoracic surgery and foregut surgery, but still the general surgeons have to lead. General surgery is a master of all the subspecialties, and this is what and all of the data which has come in the world has came up from the community centers where most of the general surgery has been practiced. And we will share our futuristic vision how this program should go on with passage of time. So this is a first slide with a very humble beginning on 29th May 2022 when we started. This slide has already, this is our whole team which work together, and teams make a lot of difference. Individuals don't do anything which the teams can make. So these are all the advantages which we have seen so far. It is a great precision, accuracy, less bloodless, and inbuilt safety mechanism. And I would only, the anecdotal evidence which we have seen so far, that is a pain. So it is by certainty we are just collecting the data, and the robotic colis and robotic ventral hernias and inguinal hernias which we have operated so far have appreciable decrease in pain. So we are just collecting our data and we will be presenting that data with passage of time. So this is one factor which we have noticed, and this is an anecdotal evidence which we can share at this time and moment. So just to have a glimpses of some how do these surgery look like, and just to fascinate our young people from this robotic surgery, I would go through a slight snapshots of these videos. So this was one of the simple lab coli. So इसको click करेंगे जरा. हाँ इसको क्लिक करते हैं. गड़बड़ करते हैं ना वो. लैपटॉप लगे हैं तो थोड़ा वेट करेंगे.
So we have never, while doing lab college, we have never given respect to the lymph node of zone. But in every lab college which we are doing so far, we do come across with this lymph node. It is so clear. We can actually get hold of the cystic artery, cystic duct, and the things are very so clear. And articulation of the instrument is so great that we can actually do the surgery in a very immaculate way. चल इसी में दिखा इसको जरा बड़ा करते हैं. So you can see how the lymph node is taken and so the wristed instrument do play an important role. You can actually execute your movements in every way and in all directions. So practically we are looking for this lymph node in our every patient, and you can see this is a. So the recording is always 2D, but we are doing under 3D vision, which is actually so you can see it is very easy. You can move all around and by doing, and you can see the movement of this instrument. Hope. Next करते. So this was one simple lab coding and contemplating next. This was one of the difficult coding which we have done, and here it is a magic of the camera which we normally operate robotically. We can make इसको चला दें movie को. So you can see we can actually we can move the camera from one side to another without any problem and going to the posterior dissection, and this is practically not possible with the help of straight laparoscopic equipment. So everything is under the control, and we can actually go around and we can pick the vessels posteriorly. We can get hold of, we can have a good dissection posteriorly, and then we can straighten our camera to contemplate the whole procedure. So we can actually take the things upside down and downside up, and we can actually do the procedure. Next slide. Next slide. Next. So this is one of the inguinal hernia, direct inguinal hernia. You can see, इसको चला दें जरा. So tap, you can actually see how important is this wristed scissor and the ease with which we can create a very thin flap. We can move this scissor forward, backward, downward, and 720-degree movement can contemplate. And practically this is so clear, 3D vision, there is a depth perception is so clear that, and we can actually move the camera within the depth of this inguinal hernia. So this is a direct sac, this is an inferior epigastric vessel, and direct sac going into the, and if you see, it's not possible to do this with the help of straight instruments, which so immaculately, and the camera practically moving into this hole of the cavity, and with the back direction of scissor, we can easily, paper thin flap can be constructed, and whole of the sac can be taken back. So this fascia transversalis is being pushed up, and sac would be withdrawn subsequently. So the camera is practically within the wound. So it's such a clear vision that there are absolutely no chance of any
doing any harm, and absolutely this is a precise. You have a bipolar instrument in one hand, you can have a good, and absolutely there is no smoke. So I have been asking the company why there is no smoke. So practically we haven't seen smoke so far in all our procedures. So it's absolutely smoke-free environment. Next pattern. Next. So robotic surgery is fantastic surgery to contemplate the incisional and ventral hernias when it is difficult to operate on the roofs. We actually can dissect the pre-peritoneal space around this ventral hernia defect. We can go all around. We can make a pre-peritoneal spaces. We can place a mesh, and mesh can be placed in the same space. And there is wide range of movements. And actually, with the help of this camera, we are actually working on the roof, and it becomes very easy to have our space, and we can put in a place on the ventral and incisional hernia, and subsequently we can complete the procedure. Next slide. So this is also one of the fantastic thing which can be done. It is very difficult to suture on the in the ventral and incisional hernia, and doing robotically assisted suturing is a very fantastic technique, and we can actually close the defects of ventral and incisional hernia before placing the mesh. So it becomes very easy robotically to using the bar suture and closing all the defect, and subsequently applying the mesh and reperitonealizing all the meshes which are placed intraperitoneally. Next. So coming to the intercorporeal suturing, this is one of the tabs which we have performed, and you can see all the huge defects can be easily closed robotically. You can run the suture in a reverse way. You can absolutely fantastically close the things, and in a very limited time if you have a barb suture. Even if you have to place a knot with the help of vital suture, it doesn't matter, and it becomes absolutely fantastic to place a reef knot, and there is actually no issue with such a range of movement of all instruments. Next slide, please. So ये प्रोफेसर याज ने काफी सारी स्लाइडें में ओवरलैप है. अगर सिर्फ मैं आपको ये बताना है, so if we say this is a surgery time, initially we had this much surgery time, 2.5. This is a console time, and this is a time which the surgeon is utilizing. For an ideal surgery, these two crosses must be very close, so that there should be minimal time in the operation theatre. तो वो अगर आप ये देखें और ये दिसंबर का हमारा देखें, तो they are coming very close, and the time is becoming less and less. Next slide, please. Ideal time, ये जो volumetric hand motion की भी प्रोफेसर याज ने बता दिया, तो we are coming near to our left hand, and that is 20 centimeter. My left hand, right hand is still moving a lot, which I have to take it down, and whole of the movement should be on wrist rather than at elbow and shoulder. Next slide, please. तो ये total cases already they have been shared by Professor Ayaz, 127, और हमारे सर्जरी का 80 share of cases है इस वक्त. Next, please. And we have gone through cholecystectomies, inguinal hernias, diaphragmatic hernias, incisional hernias, or splenectomy, adrenalectomy. So all these are the procedures which we have gone through. Next slide, please. तो ये टैग भी प्रोफेसर याज ने आपसे डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट. So this is my learning curve in robotic Coles. Started with 120 minutes, and now I have come down to ये मेरा ख्याल अक्टूबर का डाटा है, तो almost 25-30 minutes. It's an active control time in which I normally complete the procedure. Next slide.
just to go, my perspective was very clear. It was a general surgery, how we can take it in the general surgery. Uh, Mistakenly, general surgery is still taken as a non-specialized unit, but it is a master of all surgeries. और जितना भी अगर आप ये डाटा देखें, तो एक the whole thing originated from a European Community Center जो कि 207 or 94 patient in 2003 or 2007 में. These were the first manuscripts which were published in the in one of the Journal of Robotic Surgery. उसके बाद this 2010 में one of the manuscript which has laid the foundation of robotic surgery, and it practically included all the administrators and residency training programs in US. It took it along, and ultimately this paved the way to start the robotic surgery widely in US and Europe. और ये भी अगर थर्ड सीरीज ऑफ पेशेंट देखें जो कि 2016 में, दिस वाज अगेन अ लार्ज कम्युनिटी सेंटर. सो नन ऑफ द सेंटर्स which have published their data were university hospitals, and they were not teaching hospitals. So these were the three large studies which have actually paved the way to start the robotic surgery, and ultimately this surgery has blossomed to this stage. Next slide please. We should be very clear, this program would not develop unless it is a part of residency training program. And this is one of the landmark Journal of Surgical Education. This was one of the landmark, and this was basically a survey which was conducted by Association of Program Directors of Surgery. And they have actually came up with the view that, and this survey has very clearly concluded that, and this has been published in 2022. So this paper is very clear that unless we incorporate in our residency training program, this is not likely to succeed. Next please. So I would just conclude, innovations are there, they are never there to be stopped, they have to progress. And surgeons are always innovative and they are progressive, and so we have to keep the patient safety in mind, and these innovations, we have to be part and parcel of these innovations so that these are used in the best interest of our patients. General surgery is still the mother of all subspecialties, and by all means, robotic surgery has progressed a lot in colorectal and foregut, HBP and pancreatic and gastric surgery, but by all means, still general surgery has a potential to lead this important robotic program. And future residency training programs are essential, and we have to set up dry labs and wet lab and cadaveric lab so that the people should be trained enough before they are put into the real life scenarios. And thank you very much, PKLI, for taking this great initiative. Thank you, Professor Varis. Next, we have Professor Asad Shahzad from SIUT on his talk on Pakistan Society of Robotic Surgeon, his introduction. So, Professor Asad Shahzad.